proceed by introducing today's speaker, which is Mr. Raman Aggarwal. Mr. Aggarwal is the co-chairman of Finance Industry Development Council, a representative body of assets and loan financing non-banking finance companies. He is currently a consultant to the World Bank, consultant to Nomura Research Institute Consulting and Solutions India Limited, area head of NBFC at Council for Industrial Economic Understanding, and an advisor to Shriram Transport Finance Limited, which is one of the leading NBFCs. He is also an independent director on the board of Asialo Digital Limited, which is a leading NBFC in North India engaged in financing MSMEs on a digital platform. He has more than 28 years of working experience in the NBFC sector. He has been a member of advisory groups of Ministry of Finance and RBI and NBFCs. He was awarded the Best NBFC Exemplary Leader Award at the ET Now BFSI Award and 100 Topmost Influential BFSI Leaders Award at the World BFSI Congress in 2018 and 19. He is a member of Academic Advisory Council of New Delhi Institute of Management and guest faculty at Institute of Chartered Accountants, India, International Management Institute, New Delhi, and IIM Tiruchirappalli. So over to you, Mr. Aggarwal. Thank you, Anshulji. Good morning, everybody. I need that screen share, please. Somebody can give me that. Atul, that's already been handed over to you. You can share the screen. Sorry, Raman, it has been shared to you, not to Atul. Okay. Yeah, just a minute. I think I need to start my presentation and then it will show up. Everyone else needs to mute themselves. Okay, sorry for this technical glitch. Good morning. I think one important part of the introduction which Anshulji missed is that I am here because of my childhood friend, Sandeep Channa. And I was equally more enthused to see two more of my childhood friends amongst here. Of course, Padosi Atul Mohan and Samir Arora. We've all been classmates in school, so we've spent those golden days. Thank you all to give me this opportunity. So, friends, it's been my experience in interacting with various people, businesses at various levels, whether it's chambers of commerce or industry associations, or even when I was part of the ministry working groups, etc. I feel there has been a gap amongst what government agencies provide or government schemes provide and the actual consumers, the actual people who want it. And, while discussion, I came to, realize this fact that majority of these small businesses, pardon me for saying this, are not able to project your identity in the true form. Now, when I say identity, I don't mean you guys are experts, brilliant, no questions asked. I mean, nobody can doubt that in your own respective field. But when it comes to seeking something from the government or the policymakers, or for your financial needs, you need to put yourself in the right bucket, right place. तब ज़्यादा समझ आती है government को. So that is where I bring in the concept of MSMEs.
Now, MSMEs, I know you would have all heard because you would have often heard press, media, newspapers, and everybody talk about. So micro, small, medium enterprises is MSMEs. World over, the entire focus has been on MSMEs because whatever we may say about the Ambanis, the Adanis, and the Bill Gates or the Zuckerbergs of the world, the economy of the entire world actually runs on MSMEs. And you, all of you, are very much integral part of this MSME world. So much so that in terms of employment, I think more than 80% comes from the MSME sector. In terms of the contribution to the GDP may not be look good in terms of real rupee value or the dollar value, but otherwise in terms of the actual value, the contribution is huge. So I thought it is important to understand and share with you that you need to understand what you are. So you guys are part of MSMEs. You guys are governed under an MSME Act, which was passed in 2006 way back. So I have just listed out what is the definition given in the Act. So Act defines an enterprise, which could be anything, an industrial undertaking, business concern, anything, whatever name called, or even be any service provider. So for that matter, even a chartered accountancy firm is a MSME, and anybody doing any service or manufacturing is part of this MSME. Then of course there is a classification given in terms of whether you are a micro, small, and medium. Now here let me bring to your notice that ever since this act was passed in 2006, this classification was based on the investment in plant and machinery. Because originally concept of MSME आया from the concept of small industry, SIs, small scale industries. And the focus was how much you invest, capital investment in your plant and machinery. But obviously this became outdated over the years because as we all know, India today is a major service driven economy. We all know China is known to be the manufacturing hub. So it's a manufacturing driven economy. India is a service providing economy. So we are a real good, brilliant service providers, whether it's IT, software, or any other services. So post the pandemic, COVID, when it hit us and there was a lockdown, as part of the Atmanirbhar package which government announced, they have modified this definition to meet the industry demand. So they have now included the turnover aspect also. So it's not only investment in plant and machinery, but also the turnover. So if you have a turnover not exceeding 5 crore rupees in one financial year, then you are a micro. If it is 5 to 50, then you are a small. And if it's 50 to 250 crores, then you are a medium enterprise. So any firm or any enterprise up to a turnover of 250 crores is today defined as MSMEs, meaning you get a lot of benefits out of the government schemes which are there today in the market. Now, important part, and that's where one of my key areas of focus is, because I am a financial sector person. I've spent my entire career in the financial sector. वो अलग बात है कि education civil engineering थी, but as the world takes you. So the real benefit lies in availing some funding options. Lot of focus is always given. We all know. See, बड़े लोगों को पैसा लेना is no big deal. Again, I'm naming those ones, the Adanis, the Ambanis, or the Tatas or the Birlas. For them, raising money is not an issue. Problem हमेशा छोटे लोगों को आती है. So the focus, and that's a popular political move done by all governments right from the beginning. But let me add that with my experience in interaction, the current regime in place today, please pardon me, I'm not want to sound any political here, but purely going on facts, the present regime, the present government is giving a humongous impetus on MSMEs. Humongous is the word. Nothing moves in this government without having an eye or a focus on MSMEs.
So funding के लिए traditionally, we are brought up in that culture. I also know before I joined the financial sector, we were told कि भैया पैसा चाहिए तो banks के पास जाओ. You go to a bank, knock the doors of the bank. Or traditionally, since we've seen the public sector banks are, pardon me saying, I hope there's no banker here, unka behavior is no less than a government babu. Right? It has been over the years. वो अलग बात है, now things have started changing. And that is why we see the state or the mess in which the public sector banks are today. And you know how things moved in public sector banks even today. आज भी, referrals work. आज भी, what we call, should I use this word, under the table things work. So, that red tapeism, that lack of transparency has always been there. And that is why MSMEs always struggle to raise funds. But we are fortunate that we are in a country where we have a very, 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 very vibrant financial system, which is recognized by across the world, including the World Bank. Now that I'm working with them, just I will share with you, you would have all read that recently in the month of August, World Bank sanctioned a loan of $750 million to Indian government. And the sole objective of that loan is for MSMEs, right? And the most important part is where I bring into the second point in this slide. The three pillars identified for strengthening MSMEs. One of the pillars is providing them funds through NBFCs. Now imagine an agency like World Bank saying that NBFCs in India are a recognized player or a key player. And that is where there is a lot of lack of awareness among people that today NBFCs is a huge sector. NBFC today, if I can share with you, as per the latest data, would be the total balance sheet size of the entire NBFC sector is somewhere around close to 35 lakh crores, right? And we are number 3 in the financial system after banks and after insurance, but very closely with insurance and even mutual funds. So in insurance, NBFCs and mutual funds are almost running close to each other when it comes to the overall size. So that big we are, NBFCs, right? Now, why I am bringing NBFCs is because NBFCs in today's world, I have worked 28 years in the NBFC sector space in various capacities. Why NBFCs have worked in India and grown in India is because one, we are today regulated at par with banks. So regulation pura hai. But more importantly, from your perspective, see what is the biggest thing you want when you go to raise funds? One word, keyword, you will all agree with me is flexibility on the part of the lender. Rigidity नहीं होनी चाहिए कि साहब ये डॉक्यूमेंट लाओ, इतने टाइम का लोन मिलेगा, ये आपको रीपे करना है, that's it. No. See, whenever any challenge occurs in the economy or any sector or worldwide, like we are wishing going through this pandemic, सबसे पहले छोटा आदमी मरता है. क्योंकि प्रॉब्लम वहां है. We don't have deep pockets. We are dependent on the vagaries of the environment, whether it's a business environment, it could even be a policy environment. Tomorrow, some government comes up, some state government comes up with some policy which is ridiculous, and you are stuck without any fault of yours. So you need that flexibility because it directly affects your cash flows. ये flexibility आपको maximum NBFC sector में मिलेगी. There are NBFCs who specialize only in MSMEs, only MSMEs. To name a few, you would know them, but maybe it's just like people don't tend to go there. NBFCs like Aditya Birla Finance, NBFCs like we had the Religars, but even Hero FinCorp has a huge MSME portfolio today, right? Tata Capital. So all these provide Shriram City Union Finance. They are all majorly into MSME lending, right? And of course, you need to keep in mind rates of NBFCs lending are around 1 to 2% higher than banks. That's because the borrowing cost of NBFCs is higher than banks.
but you get a lot of flexibility and adaptability. And of course, then there is a government institutions, though financial institutions hai. One is SIDBI, Small Industries Development Bank of India, and one is NABARD, which is National Bank for Agriculture Rural Development. SIDBI का जन्म ही MSMEs के लिए हुआ है. If you go to SIDBI's website, everything, their vision, mission is all MSMEs only. So SIDBI is another door. And let me tell you, SIDBI, with my experience, I have found to be far more quick, efficient as compared to other government bodies. And they do come up with a lot of schemes. They also do some kind of online lending. We have unka platform hai. They have created a PSB loan in 59 minutes scheme of banks, which you would have heard PM ने काफी इसको advertise किया था. So the idea is that you go to that portal, register yourself, basic चीजें पूछते हैं, and within 59 minutes you are supposed to get an answer. That means आपको approval मिल जाएगा. So once you have the approval, then you contact the respective bank or documents देके you can then get the loan disbursed. Now, there is another one very interesting, which is very less known, but I would strongly urge all of you to look at this. There is an electronic platform available called Trade Receivables Discounting System, or TREDS. TREDS हम लोग financial भाषा में उसको TREDS बोलते हैं. Now, I'm sure all of you are experienced, seasoned businessmen. You know, पुराने time से एक धंधा होता था bill discounting. Correct? I'm sure you would all know. Correct? तो वो होता ही है कि मैंने आज किसी गवर्नमेंट एजेंसी का काम किया है, ऑब्वियसली पेमेंट बाद में आएगा, मैं वो बिल जाके किसी भी, पहले हुंडी से भी होता था या वैसे भी होता था, डिस्काउंट करा लिया कि वो बिल मैंने आज ले लिया. सो द सेम इज नाउ बीइंग डन ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेड्स. दिस इज ट्रूली ऑथराइज्ड बाय RBI. आज की डेट में देयर आर 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स वर्किंग. यू कैन गो टू द RBI वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और इफ यू जस्ट Google Trades, you will get it. So what is the system there? So if you go there, you as a MSME has to register yourself. Then अगर आपने ध्यान से सुना हो तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, और स्पेशली इस सिनेरियो में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ऑर्डर निकाला है कि सारी गवर्नमेंट एजेंसी, सारी गवर्नमेंट कंपनीज को मैंडेटरीली ट्रेड्स पे रजिस्टर करना है. राइट? तो दैट मीन्स जो आपके वेंडर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं जिनके लिए आप काम करते हो, वो रजिस्टर होंगे उस पर. एंड थर्ड एंटिटी विच हैज टू रजिस्टर आर द बैंक्स एंड NBFCs जो फंड प्रोवाइड. तो 3 लोग इसमें रजिस्टर करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर है, दैट मीन्स यू पीपल. नंबर 2 जो आप लोगों के कस्टमर हैं, जो आपसे माल लेते हैं या सर्विस लेते हैं वो, और तीसरे फाइनेंसर. तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए. Operation is you have done a work for say any government body, suppose National Highway Authority के लिए आपने कुछ काम किया है या उनको कुछ माल सप्लाई किया है. You raise, आपके पास बिल है जो आपने उनको सबमिट किया है. If you are registered on TREDS, you will put that bill on that platform. The corresponding government body or the vendor will acknowledge and confirm that yes, ये एजेंसी ने मेरे लिए काम किया है और ये इसका बिल है, पेंडिंग पेमेंट है. नाउ बैंक्स और NBFCs उस पर बिड लगाएंगी. बिड लगाकर आगे, मान लीजिए आपका 25 लाख का बिल है, तो वो बिड लगाएंगी. जो आपको बेस्ट ऑफर देके बिड जीत लेगा, वो आपको T+1 मीनिंग बिड के अगले दिन ही आपको पैसा दे देगा. डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट करके आपको पैसा दे देगा, और वो बिल अपने आप से देन इट इज हिज ड्यूटी टू गेट इट द पेमेंट डन फ्रॉम the respective government agency or the respective supplier. तो आपको पैसा immediate मिल जाएगा. Of course, it's a discounted. So you save yourself the hassles, the vagaries, the haggeries of running around in the government offices, लोगों को bribe करना, उनके तलवे चाटना कि भैया फाइल दे दो, फिर वो बाबू कहता है जी इस फाइल इस टेबल से उस पर गई है. So it's easy access to fund, no paperwork, single platform for sellers, buyers and financiers. You can transact online. And I say this because I mean I'm happy to share कि ये हम लोगों की एफर्ट से हमने 3 साल इस पर लड़ाई लड़ी, और गवर्नमेंट ने फाइनली पिछले बजट में
हमारी डिमांड को मानते हुए एनबीएफसीज को भी इसमें रजिस्टर अलाउ कर दिया है। पहले ओनली बैंक्स वर अलाउड, नाउ दे हैव अलाउड एनबीएफसीज आल्सो, रियलाइजिंग कि एनबीएफसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर यू टू get your bills paid immediately, because आपने अक्सर सुना होगा, स्पेशली नितिन गडकरी who's the minister of MSMEs, वो अपनी अक्सर हर चीज में बोलते हैं कि एक डिले पेमेंट जो है ये बहुत बड़ा इशू है MSMEs के लिए। में कुछ फिगर भी आई थी, आई नो सम लाख करोड़ ऑफ मनी इज स्टक ऑफ MSMEs बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज के बिल्स पेंडिंग है, क्योंकि वो इवन इफ दे आर ट्रुथफुल, वहां पर प्रोसीजर ही इतने लंबे हैं कि टेक्स टाइम, यू नो, बिकॉज दे हैव टू गेट अप्रूवल्स। वहां हर बाबू की लिमिट सेट है बेस्ड ऑन द चेयर ही सिट्स, सो देन ही हैज टू सीक अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू द हायर अथॉरिटी, सो वो फाइल मूव होती है, फिजिकली होती है, इट टेक्स टाइम। So that is very well taken care of by this TREADS platform. Please use it. You can Google it and see it, and you are always welcome to contact me if you have any further queries on this. Now, let me move to the other part. While I know the biggest challenge has been always to raise funds, but I am intentionally using this this concept today because I have seen even lack of awareness, or I would say the lack of zeal on the part of borrowers also. You know, sorry मैं ये word use कर रहा हूँ क्योंकि मैं NBFC sector से आता हूँ, तो मैं अपने आप को lender मान लेता हूँ, but I'm as one of you. So from borrowers perspective, one very important concept which we need to really develop in India is leasing. I'm sure आज की डेट में you all guys have traveled abroad. आपने देखा है वहां पर हर चीज लीज पर मिल जाती है. You can buy, they get a sofa on lease. You can get a TV on lease. You can get anything, everything on lease. And let me add another thing. For all of you guys who own luxury cars today, I mean, own is again a word, wrong word. आज की डेट में all luxury cars and even now post COVID, Hyundai और मारुति ने भी निकाली हुई है कार लीज स्कीम्स हैं. उसमें क्या है, आपको सिर्फ एक मंथली सब्सक्रिप्शन देना है, दैट्स इट, गाड़ी आपकी. अब वो क्या मॉडल है? सी वी अंडरस्टैंड, नीड टू अंडरस्टैंड लीज. व्हाट इज लीज? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेसर, दैट मींस जो लेंड कर रहा है, एंड द लेसी, दैट मींस द बोरोअर, वेयर द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड बट द राइट टू यूज इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी. तो मैं अगर लेसर हूं, मीनिंग मैं लेंडर हूं, और आप बोरोअर हैं, आप आते हैं कि साहब मैंने आज की डेट में एक फैक्ट्री लगानी है या यूनिट सेटअप करना है जिसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए. नाउ बिगेस्ट चैलेंज इज अ केपेक्स. केपेक्स हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर लमसम लगाने की जगह यू शुड ऑप्ट फॉर लीज, कि भैया मैं इतने की मशीनरी, मैं क्यों 2 करोड़ रुपया लगा के मशीन खरीदूं, आज मैं उसको लीज पर ले लेता हूं, और उसकी जगह इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 2 करोड़ मैं उसकी मंथली ईएमआई की शेप में लीज रेंटल दे दूंगा. तो मैं लेंडर क्या करूंगा, अगर आप मेरे पास आए हो और मैं एक लीजिंग कंपनी हूं, तो मैं वो 2 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट खरीद के मैं आपको लीज पर दे दूंगा. तो एक लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा मेरे और आपके बीच, वेयर आई प्रोक्योर द एसेट एंड गिव इट टू यू ऑन लीज फॉर अ अग्रीड पीरियड ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 years. इट्स जस्ट लाइक अ लोन. लेकिन जो आप लोन में ईएमआई भरते हो वो एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है, उसमें आपकी ओनरशिप आपकी है. लीज में ओनरशिप लेंडर की रहती है. अब आप बोलोगे कि उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आज की डेट में वी ऑल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. दुनिया मिनटों में बदल रही है, एंड गेटिंग ऑब्सोलीट इज द बिगेस्ट रिस्क, राइट? तो that will be come into the next slide, but first I want to introduce to you the concept of leasing as an alternative to capital expenditure, right? So point number 3 in this slide says, as the right to use of the assets gets transferred from the lessor to the lessee. Lessor meaning जो lend कर रहा है, lessee means you people. It is obvious asset का possession भी आपके पास आ जाता है. तो possession आपका हो गया, right to use आपका हो गया, लेकिन actual title of ownership उसके पास रहेगा. और इंडिया में लीजिंग ओनली एनबीएफसीज करती हैं, बैंक्स लीज नहीं करते. सो मेनी ऑफ द एनबीएफसीज आर इनटू लीजिंग.
इनफैक्ट कंपनीज लाइक लीज प्लान, एरावल्स, ओरिक्स, आपने कुछ नाम सुने होंगे, आर टिपिकल कार लीजिंग कंपनीज इन इंडिया, जो खाली लीजिंग ही करती हैं कार की, वो लेंडिंग नहीं करती। अब डाइमलर ने भी शुरू कर दिया है, BMW ने भी शुरू कर दिया है, फॉक्सवैगन ने भी किया है, वोल्वो ने भी किया है, हुंडई ने भी किया है, मारुति ने भी किया है। Everybody is getting into car leasing now, but leasing of other assets is also happening. So as I said, what is the benefit of leasing to you as a lessee? आपका कैपेक्स कन्वर्ट हो जाता है ओपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कन्वर्ट हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 2 crores लंप सम, अब आप हर महीने एक किस्त दोगे जो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस है रेवेन्यू में। दूसरी बात मजे की ये है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो भी आप लीज रेंटल देते हो हर महीने, वो पूरा का पूरा आपका डिडक्टिबल एक्सपेंस मिलता है आपको। I heard somebody is a chartered accountant can confirm, जो आप लीज रेंटल भरते हो वो पूरा का पूरा is a deductible business expense when you file your income tax return. So you get that benefit. It's a tax saving. Third, I told you the concept of obsolescence. See, today you invest in the machinery, you all know in whatever businesses you are, घंटे भर में हो सकता है, एक महीने में, एक साल में, 2 साल में मशीन ऑब्सोलीट हो जाएगी, नया मॉडल आ जाएगा मार्केट में। अब आप इमेजिन करो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इट, यू विल नॉट डू इट अगेन। 2 करोड़ रुपया कौन लगाएगा? नाउ लीजिंग में, बिकॉज लीजिंग के भी 2 तरीके होते हैं, देयर इज अ फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, वो मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं डिटेल में, बट उसमें एक ऑप्शन ये मिलती है कि आफ्टर द एंड ऑफ द लीज पीरियड एसेट वापस चला जाता है लेसोर के पास, बिकॉज ओनरशिप आपकी नहीं है, ओनरशिप उसकी है। सो द एसेट गोस बैक टू द लेसर, or you can have an arrangement where he sells you that asset at what is called as the residual value, meaning जितना वो आप पे कर चुके हो उतनी डेप्रिसिएशन काट के, उतनी उसकी वैल्यू काट के, और रेजिडुअल वैल्यू पे आप वो एसेट आपका हो सकता है, अदरवाइज वो एसेट वापस लेसोर के पास चला जाता है। सो दिस वे यू कैन रोटेट। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग, यू नो, अगर आप आज भी जाओ डाइमलर फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो वो आपको मर्सिडीज ऑफर कर रहे हैं 4 साल के लिए ले लो और 50% पे हम आपकी गाड़ी वापस 25% वैल्यू पे वापस ले लेंगे। तो वो यही है, आपको वापस लेके आपको नया मॉडल दे देंगे। सो यू सेव ऑन द झंझट ऑफ ऑब्सोलेंस, व्हिच इज द बिगेस्ट इशू टुडे, राइट? एंड एज आई सेड, देयर इज नो ओनरशिप रिलेटेड इश्यूज एंड इजी टू रिप्लेस एंड अपग्रेड। दैट्स इट। नाउ यू विल आल्सो आस्क मी, व्हाई वुड अ कंपनी डू लीज? अब हम लोग इंडिया में एज अ सेक्टर, क्योंकि ऐसे सेड ये एनबीएफसीज करती हैं, मेरी हर प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के साथ जब भी मीटिंग होती है हमारी, ये इशू मैं हर जगह लेके आता हूं कि लीजिंग को इंडिया में प्रमोट करिए। गवर्नमेंट अब रियलाइज कर रही है, हो सका, आई एम होपफुल, गवर्नमेंट इज ड्राफ्टिंग अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसमें 2-3 मीटिंग्स विच आई अटेंडेड, आई हैव शेयर देम विद द नोट कि कैसे लीजिंग MSMEs और एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें हेल्प करेगी। तो बेनिफिट क्या मिलता है कि जो लीज कर रहा है, दैट मींस द लेसर, उसको डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो ओनर है। लोन देने में उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो लीज करता है तो उसको किताबों में डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, ये तो कॉमन आपने पढ़ा है कि इफ अ बोरोअर डिफॉल्ट्स तो एसेट वापस रिपोजेस हो जाता है। अब ये कोर्ट में बहुत बड़े झंझट हो गए हम लोगों के लिए, बिकॉज क्या होता है, बोरोअर ने डिफॉल्ट किया, गाड़ी उठी, वो जाके कोर्ट में बोल देता है साहब ये तो गुंडागर्दी करते हैं। नाउ एज अ लेसर, सिंस आई एम द ओनर, तो लीगली नोबडी कैन चैलेंज मी। मैं बोलता हूं भैया ये मेरी चीज है, मैंने इस आदमी को दी थी, ये पैसा नहीं दे रहा, मैंने वापस ले। So it's far more easier in any court of law or before the eyes of the law to repossess and sell for a lessor. So these are the crude benefits which should attract people towards leasing. And this can be a very good alternative instead of going for a typical standard loan जो हम लोग लेते हैं banks या NBFC से. As I said, government बहुत कुछ करती है in terms of MSMEs. ये खाली ये गवर्नमेंट नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी किया है, लेकिन मैं कुछ इमीडिएट चीजें आपको बता देता हूं। आज की डेट में ये बहुत पुराना है, गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया हुआ है CGT MSE। CGT MSE है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस।
नाउ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट मीनिंग आप जो भी लोन आज की डेट में बैंक से लेते हो, और अब इसमें फॉर्चुनेटली 2018 की स्पीच जो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के एंड के दिन दी थी, ये लोगों ने स्किप कर दिया था, लेकिन वो हमारे लिए गोल्डन न्यूज थी आई उस दिन, क्योंकि उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने एनबीएफसी को सीजीटी एमएसएमई में इंक्लूड कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने किया था 30 दिसंबर 2018, लास्ट डे ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आज की डेट में अगर आप कोई भी बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हो, डू यू नो 75 to 85% of that loan amount is guaranteed by government of India. How many of you know this? And what is the biggest advantage? The biggest advantage is that in this CGT MSC benefit लेने के लिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर इसको अवेल करती है, तो कंडीशन नंबर 1 है कि आपको कोई कोलैटरल नहीं मांगना बोरोवर से। देयर शुड बी नो कोलैटरल। आप बैंक जाते हो, बैंक बोलता है भैया प्रॉपर्टी के कागज दे दो, भैया फलानी मशीनरी के कागज दे दो, कोलैटरल लेंगे हम। कोलैटरल नहीं देनी, यही कंडीशन है। टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमईज इज व्हाई सीजीटी एमएससी वाज सेट अप लॉन्ग लॉन्ग अगो, नॉट ओनली नाउ। उसके अलावा गवर्नमेंट आज की डेट में बैंक्स और एनबीएफसी को अप टू 2% इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है फॉर फंडिंग टू एमएसएमईज। इसके अलावा बैंक्स के लिए एक सेक्टर आइडेंटिफाइड है, प्रायोरिटी सेक्टर। तो बैंक्स को ये मैंडेटरी है एज पर आरबीआई नॉर्म्स और एसबीआई एक्ट कि अगर वो 100 रुपए की लेंडिंग करते हैं तो कम से कम हर साल 40 रुपया, दैट मीन्स 40% ऑफ योर टोटल लेंडिंग has to be in the priority sector. Now next question is, what is priority sector? Priority sector का पूरा एक RBI circular है which I can share offline if anybody wants. उसमें MSMEs are an important part. उसमें agriculture है, उसमें MSMEs है, उसमें certain deprived sections of the society हैं, उसमें minority communities हैं, उसमें persons with disabilities हैं, उसमें persons from the the bereaved family of members of डिफेंस फोर्सेस है। सो कई कैटेगरीज है, बट ये एक मैंडेटरी है। सो हर बैंक को कम से कम 40% लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर में करनी है, एंड एमएसएमईज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देन currently in the present scenario, when the government announced this Atmanirbhar package, there was a very phenomenal scheme announced which is still going on. I shared with my friend Sandeep on this, that government, Nirmala Sitharaman, the finance minister, announced this as part of the Atmanirbhar package 1, a scheme of 3 lakh crores of rupees for providing funds, lending to MSMEs only. And this scheme is applicable to banks, NBFCs and FIs. उसमें कुछ कंडीशन रखी गई हैं। सबसे पहले बेनिफिट बता देता हूं। इस स्कीम के अंदर जो भी लोन दे रहे हैं, 100% guarantee of the interest and principal is provided by Government of India. So there is no risk at all for any bank or NBFCs. उनके लिए 100% safe है, because today you would agree that the maximum security you can avail is when you get a guarantee, written guarantee from Government of India. तो इस स्कीम के अंदर 100% गारंटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी कैप्ड है। कोई बैंक इस स्कीम के अंदर आपसे 9.25% से ज्यादा रेट नहीं चार्ज कर सकता। एनबीएफसी 14% से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकती, राइट? हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस फॉर यू। नंबर 1, only if you are an existing borrower from any bank or NBFC, then only you are eligible, right? Next, today, whatever is your total outstanding amount with any bank or NBFC put together, uska 20% is what you can get as a fresh loan under this scheme. So suppose if you have borrowed, say 10 lakhs from 3 banks and 10 lakhs from 1 NBFCs, out of that 40 lakhs, if you have crudely repaid, अब तक आप 20 लाख वापस कर चुके हो, आपके outstanding 20 लाख है, so you will get 20%, that means 4 lakh under this scheme maximum, right?
And the cutoff date for determining this amount is 29th February because ये scheme 1st March से लागू हो गई थी. So 29th February को जो आपका total loan outstanding था across all banks and NBFCs, उसका 20% आप इस scheme के अंदर avail कर सकते हो. Next condition is also important कि your repayment record with the banks and NBFCs should also be good. 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए था as on 29th February, not during COVID. Please don't mistake because government realizes COVID में डिफॉल्ट्स हुए हैं, वो तो गवर्नमेंट में मोरेटोरियम दिया है, लेकिन 29 फरवरी से पहले तक अगर आपने 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं किया, you are eligible under this scheme. So you can avail funds under this scheme. Let me tell you, ये गवर्नमेंट ने स्कीम इनिशियली लाए थे till October, 3 lakh crores, but the November data showed that only 2 lakh crores were sanctioned and 1.5 lakh crores was dispersed. They then extended to 30th November and they have now extended this scheme to 31st March. So 31st March 2021 तक ये scheme open है. Even today it is open. So any of you who wants to avail benefit under this scheme must do it. Because as I said, it's 100% guarantee by the government. आपको कोई collateral नहीं देना. It's a done process. और इसमें I'm sharing experiences. Even public sector banks ने within a matter of days or minutes भी loan disburse किए हैं, sanction किए हैं. It has happened. So this is a very good scheme. Government has also, RBI in fact, has also allowed MSME loans to be restructured. Now what is restructured? ये don't get mislead. ये फाइनेंशियल जार्गन जो है बड़ी टेढ़ी खीर है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था समझने में, but it's common sense. Restructuring is what? आज आपका कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आपने लोन साइन किया हुआ है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एट से 12% आप रेट पे कर रहे हो, हर महीने आप किस्त दे रहे हो. फॉर सम रीजन ऑब्वियसली आपके कैश फ्लोज डिस्टर्ब है, यू वांट टू चेंज. रिस्ट्रक्चरिंग मीनिंग चेंजिंग व्हाट? You can change the tenure. आप 4 साल से उसको बढ़ा के 5 साल कर सकते हैं. Repayment schedule, आप बोल सकते हो कि भैया 6 महीने हम कुछ नहीं देंगे, moratorium. So all these are part of restructuring exercise. तो अभी तक क्या है, RBI norm ये कहते थे कि कोई भी बैंक या NBFC किसी भी लोन को रिस्ट्रक्चर करता है तो उसको NPA माना जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने देखा जो the likes of the Malias and the Nirav जो भाग गए, उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया था, रिस्ट्रक्चरिंग पे रिस्ट्रक्चरिंग पे रिस्ट्रक्चरिंग. सो व्हेन दे वर, यू नो, इट्स लाइक जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं टोपी घुमाना, तो वो टोपी घुमा रहे थे. और बहुत से डिफॉल्टर्स आज भी ये करते हैं. टू अवॉइड दैट, आरबीआई नॉर्म लाया दैट एनी एनबीएफसी या बैंक अगर कोई रिस्ट्रक्चरिंग करता है तो उसको पहले एनपीए करना पड़ेगा. अब अगर एनपीए करना पड़ेगा तो बैंक रिस्ट्रक्चर क्यों करेगा? तो अब गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है फॉर एमएसएमईज that you guys can go and ask your bank or NBFC to restructure your loans without classifying them as NPA. It is allowed. आप एक बार restructuring करा सकते हो depending upon your current cash flows after COVID has hit, and I know all of your businesses have been hit. So you can get your loans restructured based on the current, your requirement, your cash flows, and sit with the lender, discuss with him, and get your loan restructured without suffering any additional penalty on this. So that is the one part. I'm over with my presentation. I thought I'll share some facts, some points which my 30 years of experience have taught me, working both in the corporate sector, dealing with the corporate sector, and some interesting things which I have learned. I always like to share in all my talks, wherever, in whatever forum. Thank you, Raman.